गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत्रुऋतुसंहितायाम् अथ त्रयोविंशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। ततो वृषभः रूपेण गर्जमान पिनाकृतः प्रविष्टो विवरं तत्र निनन्दन् भैरवान् रवान् निपेतुस्तस्य निन्यदे पुराणि नगराणि च प्रकम्पो हि बभूवाथ सर्वेषां पुरवासिनां। ततो वृषो हरे पुत्रान् सङ्ग्रामोऽध्यत्कार्मुकान् शिवमायाविमूढातं महाबलपराक्रमान् हरिपुत्रास्तस्तेऽथ प्राकुप्युन् मुनिसतं प्रदुद्रुवु प्रगर्जोच्चैर्वीरा शङ्करसमुखम् आयातांस्तान् हरे पुत्रान् रुद्रो वृषभृदिक् प्राकृप्य दिष्णुपुत्रांश्कुरे शृङ्गर्वर्धारयत् विदारिताङ्गा रुद्रेण सर्वे हरिसुताक्षते नष्टा द्रुतं शम्भुर्गतप्राणाविचेतसा हतेषु तेषु पुत्रेषु विष्णुर्बलवताम्बरा निष्क्रमयाथ प्रग्जर्योच्चैर्यर्यो शीघ्रं हरान्तिकं दृष्ट्वा रुद्रं प्रवर्जतं हतविष्णुसुतं वृषं शरे सन्ताडयामास दिव्यैरस्त्रैक्षकेशवा तथा क्रुद्रो महादेवो वृषरूपी महाबलास्त्राणि तानि विष्णोक्ष जगृहसे गिरिगोचर अथ कृत्वा महाकोपं वृषात्मा स महेश्वर विन्नाद महाघोरं कम्पयं स्त्रीजगन्मुने तथा उत्पलुत्य तरसाखुरे शृङ्गे वर्यदारयत् विष्णुक्रोधाकुलं मूढं जानतं निजं हरिं तथा स शिथिलात्मा हि व्यतीताङ्गो बभूवः ततः प्रहारम् स हराशु हरिमाया विमोहिता गद्गर्वो हरिश्रैव विचेता गच्चेतना ज्ञातवान् परमेशानं विहरन्तं वृषात्मना अथ विज्ञाय गौरीशमागतं वृषरूपता प्रहागम्भीरया वाचा नत्स्कन्धकृताञ्जलि हरिरुवाच देवदेव महादेव करुणासा गर्प्रभो मायया ते महेशान् मोहितं विमूढधी कृतं युद्धं त्वयेषेण स्वनाथेन मया प्रभो कृपां कृत्वा मयि स्वामिन् सोपराधो हि सात्तमाम्। नन्दीश्वर उवाच। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हरे दीर्णतया मुने भगवान् शङ्कर प्राह रमेशं भक्तवत्सला हे विष्णु हे महाबुद्धे कथं मा ज्ञातवान् हि युद्धं कृतं कुतस्तेद्य ज्ञानं सर्व च विस्मृतम् आत्मानं किनं जानासि मद्धीन पराक्रमं तव्या नात्र रतिकार्या निवर्तस्व कुचारता कामाधीनं कथं ज्ञानं स्त्रीशो सक्तो विहारकृत् नोचितं तव देवेश सम्रं वीक्षतारणं तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं विज्ञानप्रथमादरात् व्रीडचन् स्वमनसा विष्णुप्राह वाचं महेश्वरम्। विष्णुरुवाच ममात्र विद्यते चक्रं तद्गृह्यत्वैतदादरात् गमिष्यामि स्वलोकं त्वं त्वदाज्ञापरिपालका। नन्दीश्वर उवाच। तदा कर्ण्य महेशानो वचनं वैष्णवं हर प्रत्युवाच वृषात्मा हि वृषरक्ष पुनर्हिरं न विलम्बं प्रकर्तव्यो गन्तव्यमित् आशुते मच्छासनाद्वरे लोके चक्रमत्रैव तिष्ठतां सन्तानादित्यसंस्थाना छिवत्वचनादपि अहं घोरतरं तस्माच् चक्रमन्यद्यदामि ते एतदुक्त्वा हरो लेखि दिव्यं कालानलप्रभं परं चक्रं प्रदीपं हि सर्वदुष्टविनाशनं विष्णवे प्रददौ चक्रं घोराकार्युत्सुप्रभं
सर्वामरमुनीन्द्राणां रक्षकाय महात्मने लब्ध्वा सुदर्शनं चान्यचक्रं परं दीप्तं मत् उवाच विबुधास्तत्र विष्णुर्बुद्धिमतां वर सर्वदेववरायूयं मद्वाक्यं शृणुतादरात् कर्तव्यं तथा शीघ्रं तथा शम्भो भविष्यति दिव्याम्बराङ्गना सन्ति पाताले यौवनान्विता ताभिः सार्धं महाक्रीडां या करोतु स तच्छ्रुत्वा केशवादाख्यं शूरास्त्रदशयोनया प्रवेष्टु कामा पातालं भुवुर्विष्णुना सह विचारमद्विज्ञायं त्वं तदा भगवानरा क्रोधा च चापं ददो घोरं देव्यो न्यष्टकस्य च हरुवाच वर्षयित्वा मुनिशान्तं दानवान् वा मदन् शजम् इदं य प्रविशेत्स्थानं तस्य स्याने धनं क्षणात् श्रुत्वा वाक्यमिदं घोरं मनुष्यहितवर्धनं प्रत्ययाख्यातास्तु रुद्रेण देवा स्वगृहमाययु एवं स्त्रीलपरो विष्णु शिवेन प्रतिशासिता सर्वलोकमगं दव्या स्वास्थ्यं प्राप जगच्छतत वृषोऽक्षरोऽपि भगवान् शङ्करो भक्तवत्सला इत्थं कृत्वा देव कार्यजगाम स्वगिरीक्षरं विशेषरावातारस्तु वर्णितशङ्करस्य च विष्णुमोहर सर्वस्त्रैलोक्यसुखकारका पवित्रमिदमाख्यानं शत्रुबाधाहरं परं स्वर्गयशस्य मायुष्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां य इदं शृणुयादक्त्या श्रावयेदे समाहिता तथा पठति यो हीदं पाठयेत शुद्ध्यो नरान् स भुक्त्वा सकलान् कामानन्ते मोक्षं वाप्नुयात् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितामा वृषेक्षरसंज्ञक नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशोऽध्याय नन्दीश्वरवाच पिप्लादख्य परम् अवतारं महेशितु शृणु प्राज्ञ महाप्रीत्या भक्तिवर्धनमुत्तमं यं प्रवाच पुरा विप्रो दधीचिरमुन्ने सतं महाशैव सुप्रतापी चयावन्यर्भुवंशज शुवेन सह सङ्ग्रामे येन विष्णुपराजिता स निर्जरोऽथं संशप्तो महेश्वर सहायिना तस्य पत्नी महाभागा सुवर्चा नाम नामता महापतिव्रता साध्वी यथा शप्तादिवोकसा तस्यां जातो महादेवो नानालीला विशारदा प्रादुर्बभूव तेजस्वी पिप्ललादेति नामता सूतवाच इत्याकर्ण्यमुनिश्रेष्ठो नन्दीक्षरवचोदुतं सनत्कुमारुवाच प्रोवाच नत्सकन्धकृताञ्जलि सनत्कुमारुवाच नन्दीश्वर महाप्राज्ञ साक्षाद्रुद्रस्वरूपधृक् धन्यस्त्वं सद्गुरुस्तात श्रावितेयं कथादुता शुभेन सह सङ्ग्रामे श्रुतो विष्णुपराजय ब्राह्मणा मे पुरातात तच्छापक्षशिलादजा अधुना श्रोतुमिच्छामि देवशापं सुवर्चया ततं प्रक्षाप्ति पिल्लादचरितं मङ्गलायनं सुतवाच इति श्रुत्वा शैलादिर्विधिपुत्रवचा शुभं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा स्मृत्वा पदाम्बुजं नन्दीश्वरवाच एकदा निर्जरा सर्वे वासवाद्या मुनीश्वरा वित्रासुर सहायैक्ष दैत्यरासन् पराजिता स्वानि स्वानि वरास्त्राणि दधीचस्याक्षमेखिला निक्षिप्य सहसा सद्यो भवनदेवा पराजिता तदा सर्वे सुरासेन्द्रा वध्यमानास्तथर्षय ब्रह्मलोकं गता शीघ्रं प्रोचु स्वं व्यसनं च तच्छ्रुत्वा देववचनं ब्रह्मलोकपितामहः सर्वं शंसस्तत्त्वेन तत्त्वश्च
तुष्टुक्षेव चिकीर्षितं भवद्वार्थे जनितस्त्वश्राष्टयं तपसासुरावृतो नाम महातेजा सर्वदैत्याधिपो महान् अथ प्रयत्नं कृतां भवेदस्य वधो यथा तत्रोपायं शृणु प्राज्ञ धर्महेतोर्वदामि ते महामुनिर्धिचिर्यः स तपस्वी जितेन्द्रिय लिपे शिवं समाराध्य वज्रास्थित्वरं पुरा तस्यास्तन्येव याच्यध्वं स दास्यति न संशय निर्माय तैर्धन्व्रजं वृतं जहि न संशय नन्दीश्वरवाच तच्छ्रुत्वा ब्रह्मा वचनं शक्रो गुरुसमन्वित अगच्छत् सामरसद्यो दधीचयाक्षमुत्तमं दृष्ट्वा तत्र मुनिशक्रं सुवर्चान्वितमादरात् ननाम साञ्जलिर्नम्र सद्गुरुसामरक्षतं तद्भिः परायमाज्ञाय स मुनिर्बुद्धसत्तमः स्वपत्नीं प्रेषयामास सुरवचोः स्वाक्षमार्तरं तथा सदैव राजश्च सामरा स्वार्थसाधका अर्थशास्त्रपरो भूत्वा मुनीशं वाक्यं ब्रवीत शक्रुवाच त्रवृष्टा विप्रकृता सर्वे वयं देवास्तत्हर्षया शरण्य त्वां महाशैवं दातारं शरणं गता स्वास्थनि देहि नो विप्र महावज्रम्ययानि हि अस्थना ते स्वपविं कृत्वा हनिष्यामि सुरद्रुहम् इत्युक्तस्तेन स मुनिः परोपकरणे रता ध्यात्वा शिवं स्वनाथं हि विसृज कलेवरं ब्रह्मलोकं गता सद्या स मुनिधर्वस्तबन्धना पुष्पवृष्टिर्भूतत्र सर्वे विस्मयमागता अथ गासुरभूमि चक्र आहूयाशु हालये लेहयत् अस्त्रनिर्मर्तये त्वाश्रष्टं निर्देश तदस्थभिः विश्वकर्मा तदा ज्ञप्त शक्रक्लिलपेस्त्राणि कृत्स्नश तदस्थिभिर्वर्जमये सुदृढे शिववर्चसा तस्य वंशो दवे वर्जं शरो ब्रह्मा शिरस्तथा अन्यास्थिभिर्बहूनि स्वपरायणस्त्राणि निर्ममे तमिन्द्रो व्रज्रमुद्यम्य वदिर्त विषवर्चसा वृत्तम्भ्यद्रवत्कुद्रो मुने रुद्र इवान्तकं तथा शक्र सुसन्दस्तेन वज्रेण सदृत्तम उच्चकर्त शिरोवात्रं गिरिशृङ्गमिवोजसा तदा समुत्तस्वस्तात् बभूव त्रिदेवोकसां तुष्टुभुर्निर्जरा शक्रं पेतुकुसुमवृष्टया इति ते कथितं तात प्रसङ्गाचरित तन्विदं पिप्लादावतारं मे शृणु शम्भोर्महादरात् सुवर्चा सा मुनिपत्नी दधीचस्य महात्मना ययो स्वमाक्षमाभ्यन्तस्तात् तदा ज्ञप्ता पतिव्रता आगत्य तत्र सा दृष्ट्वा न पतिं स्वं तपस्विनी गृहकार्य च सा कृत्वाखिलं पतिनिर्देशता आजगाम पुनस्तत्र पश्यन्तीव्रशोभनं दिवाङ्क्षतान् मुनिश्रेष्ठ सुवर्चा विस्मिताभवत् ज्ञात्वा च ततः सर्वमिदं सुराणां कृत्यम् तदा नीचचुकोपसाधवी तदोतादाशापं तीव रुष्टा तेषां सुर्वचा कृषिवर्य भार्यया सुवर्चोवाच अहो सुरादुष्टत राक्ष सर्वे स्वकार्यदक्षा हा बुधाक्ष लुब्धा तस्माच्च सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्राक्षमेध्य प्रभृतियुवाच एवं शापं ददो तेषां सुराणां सा तपस्विनी सष्क्राना च सर्वेषां सुवर्चा मुनिकामिनी अनुगन्तु पतेर्लोकं तथैच सा पतिव्रता चितां चक्रे समेधोभिः सुपवित्रैर्मुनिभिः
मनस्विनी ततो नभो गिरा प्राह सुरवच्चान्तमुनिप्रियाम् आक्षासयन्ती गिरीश प्रेरिता सुखदायिनी आकाशवाण्युवाच साहसं न कुरु प्राज्ञे शृणु मे परमं वचा मुनितेजसत्वदुत्तरे तदुत्पादये यत्नता तथा स्वभाष्टिचरणं देवी कर्तृत्वमहर्षि सगर्भा न दहेत् गात्रमिति ब्रह्मानिदेशनम् नन्दीश्वरुवाच इत्युक्त्वा सा नभोवाणी विराम मुनीश्वरा त्वां श्रुत्वा सा मुने पत्नी विस्मिता भूतक्षणं च सा सुरवचा सा महासाध्वी पतिलोकं भीपसति उपविश्याश्मना भूयं सोदरं विद्दारः निगर्ता जठ रातस्या गर्भो मुनिवरस्य स महादेवत्य नुर्दीप्तो भासयंक्ष दिशो दशा साक्षादृदावतारोऽसो दधी च वरतेजसा प्रादुर्भूतं स्वयं तात स्वलीलाकरणे क्षमा तन्दृष्ट्वा स्वसुतं दिव्य स्वरूपं मुनिकामिनी सुवर्चाज्ञाय मनसा साक्षाद्रुद्रावतारकं प्रहृष्टा भून् महासाध्वी प्रणम्याशुननावसा स्वहृदि स्थापयामास्तत्स्वरूपं मुनीश्वर सुवर्चा तन्यं तं च प्रहस्य विमलेक्षणा जननी प्राह सुप्रीत्या पतिलोकं भीप्सति सुवर्चोवाच हे तात परमेशान चिरं तिष्ठास्य सन्निधौ अक्षत्थस्य महाभाग सर्वेषां सुखदो भवे ममाज्ञाप्य सुप्रीत्या पतिलोकाय चाधुना तत्र स्थाहं च पतिना त्वां ध्यासे रुद्ररूपिणं नन्दीश्वरुवाच इत्येवं स बभाषेथ सुवर्चा तनयं प्रति पतिमन्वर्गं मत्साध्वी परमेन समाधिना एवं दधी च पत्नी सा पतिना संगता मुने शिवलोकं समासाद्य शिशेवे शङ्करं मुदा एतस्मिन्नन्तरे देवा सेन्द्राक्षमुनिभिः स तत्र जग्मुस्तरां तात आहूता इव हर्षिता हरिब्रह्मा च सुप्रीत्या अवतीर्णं शङ्करं भुवि सुवर्चायां दधी चादाययुतु स्वगणेशः तत्र दृष्ट्वा अवतीर्णं तं पुण्यपुत्रत्वमागतं रुद्रं सर्वे प्रणेमुक्ष तुष्टुबुर्बुर्दुपानये तदोसत्वो महानासी देवनान्मुनिसतं निधुर्दुन्दुभयस्तत्र नर्तक्यवनं न नृत्युर्मुदा जगुर्गन्धर्वपुत्राक्ष किन्नरावाद्यवादका वादयामासुर्मरा पुष्पवृष्टिं च चक्रिरे दधीचे पिप्लपितुर्विलसन्तं सुतं च तम संस्कृत्य विधिवत् सर्वे वैष्णवाद्यास्तुष्टुः पुनः पिप्ललादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्म प्रसन्नधि प्रसन्नो भवदेवेश इत्युचे हरिणासुरे इत्युक्त्वा तमनुज्ञाय ब्रह्मा विष्णुसुरास्तथा स्वं स्वं धाम ययुः सर्वे विद्याय च महोत्सवम् अथ रुद्र पिप्लादो क्षत्रमूले महाप्रभु ततापं सुचिरं कालं लोकानाहितकामया इत्थं सुत्पत्तस्य पिप्लादस्य सम्मुखे महाकालो व्यतीयाय लोकचर्यानुसारिणा इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शत्ररुद्रसहितायां पिप्लाद अवतारवर्णनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः।